Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are gonna do this makeup look inspired by this right here, Kiara Advani's look, and I am really excited to show you guys how I did this look. So keep on watching. Don't forget to like, share and subscribe and be a part of this channel. वैसे वो like subscribe button free है तो please उसे ज़रूर दबाएं और make sure you hit the subscribe button and be a part of my journey because soon we will be hitting 1,000 subscribers. And yeah, keep watching, watch till the end. Just do this makeup look and yeah, let's start the video. मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइजर. Like take a good amount of moisturizer, okay? And I'm breaking out, guys. Like मुझे अभी एक क्या हुआ है और कुछ फोरहेड पे भी पिंपल्स हो रहा है because I am not well. Like कुछ तो तबीयत खराब हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों. So and rest of it you're gonna put it on your neck. एक proper moisturize. Sunscreen, जो भी आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो. Okay, after doing my base, like my moisturizer and my sunscreen, I give at least 2 to 3 minutes of gap and then I start whatever makeup I want to do. So I'll give this thoda sa time and then now we'll be using this Insight Cosmetic का ये 3-in-1 primer and it's really good. Like come on, come out. So this amount I'm taking, I'm gonna put this on my T-zone, like focusing on my T-zone and then moving it around my face. Like मेन फोकस आपको अपना T-zone रखना है एंड देन उसको जहाँ जहाँ आपको लगाना हो लाइक ऑलमोस्ट पूरे फेस पे कवर करना है. आफ्टर पुटिंग दिस आई कैन सी लाइक बहुत ही प्यारा सा फिनिश आ जाता है, लाइक बहुत स्मूथ लगता है. सो आई एम डन विद द बेस मेकअप. लेट्स डू आवर आईब्रोज. Now as you can see कि कुछ ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, so I use this palette Swiss Beauty का, जो इस मेकअप में हम यूज़ करेंगे. पूरे मेकअप में यही पैलेट यूज़ होगा. I take this brown shade, like a very brown, मतलब बहुत ही डार्क ब्राउन है ये, and use it as a eyebrow pencil की जगह आप आई शेडो पैलेट भी यूज़ कर सकते हो. अगर वो आपके शेड को मैच कर रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके, आई थिंक मैं ये आगे वाला एरिया फिल नहीं करूँगी, लाइक वो ज़्यादा ही हो जाएगा फिर. Just gonna fill in the outer section and then use a spoolie. So my eyebrows are done. पहले हम अपना बेस कर लेते हैं and then we'll go with the whole look. I'm using this foundation, a very like teeny tiny amount of it. ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ करना. I don't like too much of foundation. It's exact my shade, so make sure you use the exact shade of your skin tone. Here we have a beauty blender. Now you're gonna blend this. It's giving a good coverage. भाई मेबलिन का तो
ये फाउंडेशन बहुत अच्छा होता ही है, नो डाउट। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई फाउंडेशन लेते हो तो आप स्टोर पे जाके लो। ऑनलाइन मंगाओगे गलत शेड आ जाता है, नो मैटर व्हाट। और अगर आप ऑनलाइन मंगा भी रहे हो तो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट, जैसे जो भी क्रिएटर आप देखते हो उनका शेड आपके शेड से मैच कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा फाउंडेशन यूज़ कर रहा है, तो आपको वो सूट करेगा, मतलब वो फाउंडेशन जाएगा फिर आपको भी। बेस इज ऑल रेडी, कंसीलर, and this is the concealer I'm using. This is from Swiss Beauty in the shade 02. By the way, इसमें मैंने एक और शेड मिलाया है, मेरा फाउंडेशन का शेड, कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था मेरे को, तो मैंने थोड़ा सा मिलाया जिससे इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई और कलर शेड भी अच्छा हो गया। So I'll put a little bit of highlighting points like on my forehead, like जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है थोड़े थोड़े से। Okay, that's it. A little bit of on my eyelid, enough. Let's blend it. Okay, base is ready now. As she has a very pretty smoky eye look going on, तो हम वो करेंगे। and guys, she don't have a lot of blush, but जो blush है it's in a very pretty peachy color. Just this, it's looking red but it's not red, it's a very pretty peach color. Like if you blend it, it's very beautiful peach color. Okay, so this is what we are going to use on our cheeks. Beautiful. A little bit of a nose. Okay, now just blend it with your beauty blender. Okay, I think it's looking good. Now let's start our makeup. Let's start our eye look. And like थोड़ा सा पीची सा शेड है जो मैं देख सकती हूँ, एंड काजल है, थोड़ा स्मोकी आई है, बिल्कुल पूरा स्मोकी आई नहीं है, थोड़ा सा है. So we'll start doing that. First you're gonna do is make sure your brushes are clean. सबसे पहले हम अपनी आईज को प्रैप कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, इसको एक बेस तैयार कर लेंगे using this shade. This is like a concealer shade, so use it on the crease to have a base. Okay, and same goes with the other eye. Do the same thing on your lower eyelid. नीचे भी हम वही करेंगे, यही शेड अप्लाई करेंगे थोड़ा सा एक बेस रेडी करने के लिए. Okay, I think it's looking good. This is I'll start. Take a little bit of it on your brush, tap it off, and applying on the outer lid. Okay, it's enough. We don't want too much. It's very minimal, very light shade. Okay, now I'll be taking brown shade, which is this orangish brown. I think it's orange, and blending it with this color
I'm going on the lid in a very tapping motion, like halka halka sa on my lid. Here we go. Okay, as you can see. वेरी लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिड पे करके उसके बाद आई एम ब्लेंडिंग इट आउट, ठीक है। So I'm doing this and then moving it out. As you can see, this is how it's gonna look like. Now we'll do a kajal thing. जो भी काजल का है उसमें. Let me put the kajal on my eyes and then we'll start the. A few minutes later. Actually मेरा काजल खत्म हो गया है तो मैं उसका इसमें लेके फिर लगा रही हूँ. It's a hack. Now what you are gonna do is smudge it. बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का smudge करना है. अब आईलिड पे भी मैं इसको ब्रश में जो काजल है उसी को आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी. I'll take a little bit of it from the kajal and apply it on my upper lid. Okay, see. But I prefer putting kajal on your lid with brush. और ज़्यादा हेल्प करता है उसको स्मूथली ब्लेंड करने में. और डायरेक्ट काजल से लगाओ तो एक हार्श लाइन आ जाती है. Smudge it with your finger. Very beautiful, like बहुत ही अच्छा लग रहा है. I like it. Now taking like a little bit of darker shade like this one, but I'll take a little bit of it, dab it and put just right where the काजल के बिल्कुल पास में कि वो स्मूथ लगे. ओके, सी क्या लग रहा है. सेम विद द अदर आई. वो पूरा ब्लेंड हो चुका है जो काजल था and now it's looking so good. Now doing it on my lower line, lower waterline. Now we will be putting, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिप मेकअप नहीं, लिप्स पे नहीं है, लाइक थोड़ा सा बिल्कुल न्यूड शेड ऑफ हर नेचुरल लिप शेड. तो जो मैंने चिक्स पे अप्लाई किया था मैं वही अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे. एंड a little bit of it, yeah. And then I'll be applying this peachy shade on my lips. Okay. Now apply your mascara और mascara apply करने से पहले don't forget to curl your lashes. By the way, मेरे चैनल पे फर्स्ट मेकअप लुक होगा, so please whoever is seeing this do like, share, subscribe and let me know in the comment box if you like the video and if it was helpful for you guys or not. Okay, my lashes are curled pretty much. Now I'll be applying this colossal mascara from Maybelline again, a very light coat. Okay, look at the difference, guys. Almost the makeup is complete and looking good. You can apply your highlighter and all stuff. Compact तो हम भूल ही गए. So again I'm using this from Fit Me and quickly dab it under my eye like that. जो भी फॉलो, मतलब जो भी थोड़ा सा काजल इधर उधर हुआ है वो सेट हो जाए. ना क्लियर लगे मेकअप अपना. So she has some little bit of glitter under her eyelid, तो मैं थोड़ा सा इसी में से
ये वाला शेड लेके थोड़ा सा अपने आईलिड्स के पास लगाऊंगी, गिव दैट शाइन। इट्स रियली लुकिंग गुड यार। मेरे को मतलब लगा नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा, बट इट्स लुकिंग गुड। नाउ I'll apply my lip gloss और makeup look, बिंदी, okay, so here we have our makeup look. I hope you all guys are like you go. और अभी तक जो बना रहा मेरे वीडियो पे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर गर्ल फ्रेंड्स, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।